तो पढ़ाई लिखाई के लिए भी बोला है कि थोड़ा सा क्या नाम है बेटा आपका, क्या नाम यादव नाम है आपका? आप भी पढ़ाई करते हैं? कौन सी क्लास में? पढ़ाई चल रही है, स्कूल जा रहे हैं कि कितने क्लास है? क्यों नहीं जा रहे? से निकलने भी नहीं दिया जा रहा है आपको?
Very good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes. So in the last session, what we have discussed? Yes. In the last session, RIP, DIGRP, right? The dynamic routing. Correct? Abhimanyu? Yes. DPR. Raviraj. जी Last सर session पे क्या discussion हुआ था? सर हम क्लास ज्वाइन नहीं किए थे सर सैटरडे को Dynamic routing. Dynamic routing. हाँ. Dynamic routing में कौन सा RIP और EIGRP डिस्कशन किए थे, राइट? Yes. हाँ, तो ये सारे तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स किए हो RIP और EIGRP के? Yes, sir. काम कर रहा है? कॉन्फ़िगरेशंस? Yes, sir. ठीक है. अब ये रिक्वायरमेंट मैं दे रहा हूँ, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम्हें बेसिकली सबनेटिंग करना है. ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सबनेटिंग. तो अच्छी तरीके से सोच समझ के करो. The company has 5 floors. Company has 5 floors. Where floor 1 containing 120 systems. Floor 2 contains 650 systems. Floor 3 contains 16 systems. Floor 4 contains 2 synchronized systems. And floor 5 contains 2 0 20 systems. Okay, so that is your base requirement. Every single floor is having that many number of systems. Now, floor 1 and 3 will be added with 500 systems in next 6 months. Whereas floor 2, 4 and 5 will be added with 1,500 systems in next 1 year. Okay. Now listen very carefully. Your requirement that is for base, it is different, and your upcoming requirement that is in future, that is different. Okay, so that is why when you are calculating the total number of machines, okay, which is needed for you in each of these floors, you will have to calculate the current requirement plus the upcoming requirement, means the future requirement as well. You will have to add them together and you will calculate the total requirement. Okay, so company's base requirement is up to here. Okay, and in upcoming days, how many number of systems will be added in each of the floors, that is different. So when we are calculating our total requirement, like in floor 1, total how many number of systems are required, then make sure that you add the future requirement with the current requirement and calculate your total requirement. Okay. So this is what exactly the real-time subnetting question it looks like.
Okay, this is simply just an example of how you are going to deal with the subnetting type concept or subnetting requirement in the organization. Okay, so design a subnet scheme for this requirement. Design a subnetting scheme for this requirement using the network we have, that is 165.170.10.0/6. This is your class B subnet mask we are having for our network address. So this is what we are going to be using to perform the subnetting for all this requirement. So very much straightforward process you are having. Okay, straightforward process. And with the straightforward process, you calculate the total requirement by adding the future requirement as well. Okay, so solve it. You are having time 15 minutes to complete it. Okay, so that is your 15 minutes time, everyone. You utilize it and complete this as soon as possible. Simply just respond in the chat box once you complete it. Now, if you are having any of you, if you have any doubts understanding the requirement, you can tell. Okay, I can again explain it. But this is what you need to be doing at this point of time when we are somewhere in the middle of performing routing, specifically the dynamic routing. We are having OSPF, which we will finish today. So at this point, you should be able to do this type of requirement solution. Sir, Tell me. floor 1 will be added with 500 and floor 3 will be added with 500, sir. And that is what you need to find out. Yes, I'm not telling you. See the requirement and find it. Okay, what the requirement is saying, based on that only you will have to find the total systems. Yes. Okay, in the requirement itself, everything is explained, right? What you need to do to calculate the total. Okay, so just do this. I just want to find out that how you are solving it. Okay, by yourself. Remember, it's a class B slash 16. Okay, 16 host bits you are having. Based on that only perform the subnet. Okay, now do this and let me know. You are having 15 minutes time, which is basically starting right now, all of you. I'm muting myself.
नहीं लाइब्रेरी में तबीयत कुछ आराम बा खजूर का बंद रखना ठीक बा चुनचुना कर लो ठीक बा रह के का डाली होता खाली रह के का डाली खोजवा तक हमने ठीक खोजवा चंदन कर ठीक हो जाए जब चंचनाए तो रात भर तो चंचने भी ना कर काले जूना तक ना चंचनाए लेकिन काले पत्ता मंगा दे कि जब चुनचुनाए तो फिर खा ले करें ठीक ना दवाई 5 घंटा को ले करो बीखा सुन ले लिए कहीं पर एक से शरीर ठंडा रहे कैसा मेरे पापा क्या बताऊँ बुखार तो कम है बुखार तो कम है तो थोड़ा आराम करो उसको बंद करो स्ट्रेस पड़ता है क्या है चल रहा है उसको पानी लगा कान में बल्कि लगा लो सुनते रहो अगर वो दिक्कत है गाड़ी पानी हाँ तो बाद में क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस भी कम चाहिए ना समझ गया चला ये अपने पास वो भी पकड़ लियो
खाने का स्वाद भी नहीं आ रहा होगा, देखो तुम्हारा गला भी खराब है। अभी नहीं करा तो नहीं खाने को। गला भी खराब हो रखा है हम लोगों से, उसके लिए तो तुम थोड़ा सा वो डाल के मीठा नहीं होगा, उससे बहुत फर्क होगा। एक ही साइड है केवल, या फिर दोनों साइड है ना, एक साइड कम होगा, इधर नहीं है कुछ भी, इधर ही बढ़ रहा है। इधर ज़्यादा हो गया होगा ना, एक साइड कम होगा और एक साइड ज़्यादा हो गया। अभी थोड़ा उसका लगा करने लगा, तो ऐसे ना खाना तो एक 24 घंटा में ही खाना होता है उसको। तो मैंने देखा कि उससे जो हम लोग नमक डाल के करते हैं ना, उससे ज़्यादा आराम देता है बीटाडीन। और भी गलत हल्दी डालो, हाँ उसमें हल्दी डालो, नमक डालो कि थोड़ा थोड़ा उसी में हल्दी डालो, बीटाडीन एक मंगा लेना, क्या पता क्या हाथ में हो गया समझ में नहीं आया। ये इसको होगा वो। एकदम बाहर भी नहीं निकले, बैठे रहे। उसको तो हुआ ना मनीष को, मनीष को हुआ, मनीष ठीक हो गया, इसके बाद पापा को हुआ, पापा को ठीक हो गया। घर में आ गया ना एक आदमी को, ठीक ही था, 5 बजे तक बैठा था यहीं पे। सुबह में इलाज हुआ तो एक टेबलेट में खाया था कल का, चला 5 बजे यहीं पे बैठ कर मोबाइल में देखा था, देखते रहा। न तो मैं ऐसा लगा कि बैठ नहीं पाऊँगा, आकर गिरा, हाथ पर चला गया। हमारे बाद 20 दिन बाद सब लोग पड़े हैं। धीरे धीरे ना फैला, तुमसे दूर दूर 20 दिन बाद वो चीज फैलेगा। घर में आ जाए ना तो आराम करो, हैं? आराम करे करे। पेट में बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत खतरनाक वाली पेन होता है। वो पेन में ऐसी होती है ना, सोया जाता है ना, उसे क्या जाता है ना, बैठा जाता है, समझ में नहीं आता और लगता है वो इसे करने लगता है पीछे से कोई एक लात कस के मारा है एकदम। फिर ऐसे हो जाओ। आराम करो तो, हैं? तुम्हारे तो All right, finished. Yes. Abhimanyu, completed. First floor is what? Floor 1. How many systems? 120. Floor 2. How many systems? 650. 650. Floor 3. How many? 16. Floor 4. 2090. And floor 5. How many systems? 20, right? 20. So yes. This is your basic requirement. Okay. Now this next requirement that is will be added in upcoming year. So floor 1 and 3 will be added with 500. Right. So it means what? 120 plus 500. Right. So how many systems total we are having? 620. 620. 620. Right. 620, sir. 20. 20, sir. 20 systems. Yeah. Then this one is
516. 516 systems. And 2, 4, and 5. That is 1500. So we are adding 1500 here. How many? 2150. So that is 2150. 150 systems. And this one again 1500. 1700. So that is 1700. 17. How come 17? 3590. 3590. No, 3590, right? 35. Yeah. 3590 systems. And this one is 1500. So it is 1520. 1520. So that is your overall requirement, right? So now find out the largest one, which is floor 4, correct? So let's take this one. That is our overall requirement. Then which one is the lowest? This one. This one is the lower requirement. Then which one? Floor 5, right? Yes. Floor 5. Then which one? 620. Floor 1. And lastly we have 516. That's it. So that is our network address. Based on that, you will have to perform subnetting now. All these things are coming in class B subnetting. Yes. So for floor 4, what is the subnet mask coming? What is the subnet mask coming? 255.240. 240 means you are taking 2 raised to 12. 4096. Yes, sir. Right. Yes, So sir. 4096 means the slash value will be coming as what? 20. What will be the slash? Slash 20. So 20. first address will be 165. 165.170. 0.0. That is the network address. 0.1 will be first relate host, right? Yes, sir. Then the block size. What is the block size? 256 minus 40. Yes, sir. That is 16. So next subnet address will be what? 165.170. 165.170. 16.0, 16. right? Yes, sir. Slash 20. So the broadcast address will be 15.255. 15.255. 15. And last relate host 15.254. 15.254. 254. So that is our network for 2150 systems. So for 2150, which part we are taking? Same power, right? Yes, sir. 2 is to 12. So Yes, again, sir. slash 20 is coming. So our network address is now 165.170. 16.0. So 16.1 will be first relate host, correct? What is the block size? Same, sir. 56 minus 16. 40. So that is equal 16. So it means 16 plus 16, that is 32.0. Yes, Next sir. subnet. So broadcast address will be 31.255 slash 20. And last relate host address will be 31.254. 254. That's it. So that is our next network. For 1520, which part we are taking? Again, same power, slash 20. Right. Yes, sir. Because
we cannot take 2 raised to 11, right? 2 raised to 11 is what? 2048. So 2 raised to 12, again we are taking. So our network address now is 165.170.32.0. So 32.1 will be first valid host address. Block size again is coming as what? 16. So 16 plus 38, 32 is how much? 48.0 slash 20. Then the broadcast address we are getting, that is 47. 11 power आएंगे 255. 255 slash 20. And this one is 25.254. 54. So that is our next subnet for 620 systems. So for 620 systems, which power we are taking? 2 is to 10. 2 to the power 10. So 2 is to 10 means what? We are taking slash 22. Correct? yes sir Yes, Yes or sir. no? Yes, sir. Yes, sir. Slash 22. So it means what? Our network address is 165.170.48.0. So 48.1 will be first where it goes. Block size will be how much? 256 minus 252. That is equal to how much? 4. 4, sir. So 4 plus 48 is how much? 52. 52. 10 slash 22. So it will be, broadcast will be what? 51.255. And this one will be 51.254. That is our next network address for 516 systems. So for 516, again, we are taking the same power, 2 to 10 slash 22 is coming. So our network address is now 165.170.52.0 slash 22. So 52.1 block size we are getting. That is again the same 256 minus 252, that is 4. 4 plus 52 is 54.0. That is our next subnet. And 53.255 and 53.254. That is our last valid host address. That's it. Everyone understood how exactly we are calculating on this? yes sir Yes, sir. yes sir ठीक है. तो रिक्वायरमेंट ऐसे ही तुम्हें करना है, ऐसे टाइप के रिक्वायरमेंट दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस पे. ओके, इसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे तुम्हें सबनेटिंग करना है. So that is very much important that you understand the requirement, total how many number of systems you have, read the requirement and find it properly, and then calculate it from highest to lowest, then perfect. Okay, if you want, you can take a screenshot of this, all of you. सर आपने जो फिफ्थ फ्लोर का लिए सर वो 12 पावर लिए थे सर 11 में हो जा रहा है ना कौन सा? इस वाले के लिए? यस 2048 है Fantastic. नो उसके नीचे वाला 2048 है ना? ये 1520 1520. 11 पावर में हो जा रहा है सर 11th पावर पे हो जा रहा है ना 1520 Yes, sir. और Yes. 2048. ठीक है, 11 2048 पावर होने से कितना आएगा तुम्हारा? 224 आएगा 224 आएगा नहीं, सबनेट मास्क बोलो. सबनेट मास्क कितना आएगा? Subnet to 248. 11 है 248 आएगा. 248 255.255.248 248 आएगा यस सर राइट. ब्लॉक साइज 8 रहेगी /21 आएगा /21.
Yes. /21, right? हाँ, ये अच्छा किया, करेक्शन कर दिया, ठीक है. All right. So what we are going to be discussing today, that is your OSPF and SEO. First of all, let me just open this window here. Okay, so OSPF basically stands for Open Shortest Path First. Okay, this is a dynamic routing protocol. It basically uses area concept. Area concept means your entire topology, which is consisting of all the 4 lanes. It is now divided in areas. ये देखो, LAN 1 ये area पे है, LAN 2, LAN 3, it is in this area, LAN 4, it is in this area. Okay, so it means what? It means that our entire topology of 4 LANs, it is divided across multiple areas. All these areas are identified using area ID. Okay, these numbers what you are seeing, these are called as area ID. Okay, all these numbers. So these are unique identifiers of your areas, which uniquely identifies every single area in OSPF. Okay. So among all these areas, we have something called area 0. This is called as a backbone area. We call it a backbone area. Just think of this area as the main area in OSPF. Main area. Okay. It is considered as the main area. Why? Because in this type of multiple areas, okay, always you must have a backbone area. बैकबोन एरिया तुम्हारा होना ही चाहिए. Okay, मेन एरिया तुम्हारा होना ही चाहिए अगर मल्टीपल एरियाज. Okay, so these are basically coming in OSPF designs. We have 2 types of designs. We have one is called single area design, one is called multi area design. What we are seeing here, it's an example of multi area design. Okay, जिधर पे मल्टीपल एरियाज तुम्हें देखने को मिल रहे हैं. Okay, लेकिन सिंगल एरिया डिजाइन भी होता है, जैसे कि ये तुम्हारे 4 लेंस, चारों लेंस एक ही एरिया पे हैं. Okay, in a single area. So when we have a multi-area design, then all these areas which are not area 0 is reserved as backbone. Okay, is always reserved as backbone area. And all these other areas what you are seeing here, these are considered as non-backbone areas. Non-backbone. Non-backbone. So how do you recognize a non-backbone area? Check the area number. This area ID. If it is 0, it means it's a backbone. If it is non-zero, it means it's a non-backbone. Okay. So when we are having a multi-area design and we have multiple non-backbone areas, they want to communicate with each other. Okay. This is one exactly, they need to connect to the backbone area in order to communicate. मतलब नॉन बैकबोन एरिया से अगर तुम्हें नॉन बैकबोन एरिया पे कम्युनिकेशन करना है, then you must have a backbone area connected to all the non backbone areas to allow that communication. बैकबोन एरिया से अगर तुम्हारा नॉन बैकबोन कनेक्ट नहीं हो तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता फ्रॉम वन नॉन बैकबोन टू अनदर नॉन बैकबोन. फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर पीसी, it is in this particular non backbone area, and this server, it is in this non backbone area. If this PC wants to communicate to this non backbone server here, it means that it has to send information to the area 0. From area 0 it should go to this non backbone. When the server is communicating, then the server should communicate to the area 0. Then it should send informations to this
नॉन बैकबोन मतलब एरिया 0 से होके तुम्हारे कम्युनिकेशन होना चाहिए if you're having a multi-area design. Okay. But in terms of single area design, it is not required. Single area means every single of your lens, it is coming in one area. तो सिंगल एरिया पे तुम्हारे बैकबोन एरिया अगर नहीं भी रहता है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है. Okay. It's not required. So all these areas, okay, always are defined in the process, OSP process. Okay, this process we are having 0 to 65535, 0 is reserved, 1 to 65535, we can take any number from this range. And we can define an OSP process. मतलब अगर तुम्हें OSP कॉन्फ़िगर करना है, it means तुम्हें प्रोसेस आईडी सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और उसके बाद ही तुम अपने एरिया को कॉन्फ़िगर कर सकते हो. Okay. If you are not configuring process ID, you cannot configure OSPF areas. Okay. क्योंकि process ID पे ही तुम्हारे एरिया के configurations define होते हैं. Okay. So that is why always we need to configure a process ID first, then only we can configure informations in it. तो यही तुम्हारे इधर पे दिया हुआ है that area 0, okay, this one, every single area in OSPF is identified using an area ID. OSPF uses process ID which ranges from 1 to 65535. Process ID 0 is reserved. It means that you cannot use it. Area 0 is called backbone area. That is the main area in OSPF. And it is always recommended in OSPF multi-area design to connect all the non-backbone. Okay, ये इधर पे focus करो ज़्यादा. Connect all the non-backbone areas to the backbone area 0, specifically in multi-area design. जैसे कि ये तुम्हारा multi-area design है. In this type of multi-area design, always you must connect your non-backbone areas to the area 0. Okay. तभी तुम्हारा area 501 से area 601 पे communication होगा. So every single router in OSPF is identified using a router ID. Okay, जिसको हम लोग RID भी कहते हैं. Okay. Router ID basically होता क्या है? That is a 32-bit value, which looks like an IPv4 address, but it is not an IPv4 address. इसका मतलब है कि अगर तुम राउटर आईडी को देखते हो ठीक तरीके से तो ये तुम्हारा आईपी एड्रेस की तरह ही दिखता है 192.168.100.1. ओके, तो कोई भी देख के यही बताएगा कि ये तो IPv4 का एड्रेस. ओके, बट इट इज नॉट एन IPv4 एड्रेस. इट लुक्स लाइक एन IPv4 बट इट इज नॉट. अभी ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग IPv4 एड्रेस देखते हैं, ओके, IPv4 जैसे कि यही सेम एड्रेस मैं अगर IPv4 पे देता हूँ 100.1, then always I need to write a subnet mask of it. So subnet mask is 255.255.255.c. I need to write it. The subnet mask always is needed in IP address. Okay. But in router ID, we don't have any type of subnet mask. It is simply just a value. Okay, just 32-bit value without any type of subnet mask. So this is what you are seeing, the clear difference here. Okay. That when you configure an IP address, always you will have to give the subnet mask in it. Otherwise it will not be considered as an IPv4 address. लेकिन अगर राउटर आईडी को देखते हैं तो राउटर आईडी भी IPv4 एड्रेस की तरह ही दिखता है लेकिन उस पे सबनेट मास्क नहीं है. ओके, सो दैट इज यू आर हैविंग द डिफरेंस. सो एवरी सिंगल ऑफ दिस ऑक्टेट, क्योंकि ये सारा ऑक्टेट पे रिप्रेजेंट होता है तो हम लोगों के 0 से 255 तक का वैल्यू रहता है. ओके, you can give any value in between 0 to 255 in each of these octets to define your router ID. Okay. तो मैंने इधर पे 192 डाला, 168 डाला, 100.1. ओके, ये चारों ऑक्टेट पे तुम कौन सा भी वैल्यू दे सकते हो इन बिटवीन 0 to 255, because that is an octet where 0 is the minimum and 255 is the maximum value. This is the algorithm which is used. Okay, it's called Dijkstra shortest path first algorithm. कौन सा भी डायनामिक राउटिंग ले लो उस पे तुम्हारे एल्गोरिथम्स हमेशा रन करते हैं जिसके बेसिस पे बेस्ट पाथ को कैलकुलेट किया जाता है. Okay. So how to determine that this is the route which is the best route? This is what the algorithm is used for that purpose. जैसे कि RIP के केस में हम लोगों ने देखा था बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम is used. बेलमैन फोर्ड. This is the algorithm which what RIP uses to calculate the best route.
Similarly, EIGRP के केस में EIGRP, this is the dual algorithm which is used, DUAL. So every single dynamic routing protocols when you are running, they are basically dependent on these algorithms to calculate the best route. Okay, because the algorithms is defined with all the formulas. Algorithm पे सारे formulas defined है, जिसके basis पे तुम्हारे best route को calculate किया जाता है. Okay, so the name of the algorithm is important. Okay, you will have to remember it क्योंकि interview पे ये सारा सवाल पूछे जाते हैं. So one thing I would like to tell you about the router ID here, that the router ID should be unique. Okay, मतलब तुम अगर gateway 1 पे router ID देते हो 10.1.1.1, then in router 1 you cannot give 10.1.1.1. It should be unique. So router ID तुम 10.1.1.2 दे सकते हो. Okay, इस router पे तुम दे सकते हो 10.1.1.3. ऐसा करके दे सकते हो. Okay, it should be unique. Okay, because based on that only OSPF identifies every single of these routers in this entire topology. Okay, so you should not configure any router ID which another router is using. You should always give a unique router ID. Okay, so that is always important for you to remember. Now, OSPF is having certain types of routers. One is called internal. Well, internal router basically वो router होता है जिसका हर जो इंटरफेसेस हैं जो तुम्हारे दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है वो सारे इंटरफेस एक ही एरिया पे. Okay, for example, router 1. Router 1 is having two interfaces. One is FS0/0, one is FS0/1. And both the interface, it is in area 0. As you can see, single area. एक ही एरिया पे है. अगर हम लोग गेटवे 1 पे देखते हैं तो गेटवे 1 is having this interface connecting to 501 and this interface connects to area 0. Okay. If I see gateway 2, this interface connects to area 0 and this interface connects to area 601. So we cannot call gateway 1 or gateway 2 as internal router. Why? Because they are connecting multiple areas. Okay. So this router 1 is called internal. Why? Because both the interface connects to areas. Okay. So that is why it is very much important to identify the type of router. Everyone got it? Internal router. Anyone having any doubts? सर इंटरनल राउटिंग और एक बार रिपीट करिए. ये देखो तुम्हारे ये जो तुम्हारे जो एरिया 501, ये एरिया 501 का बाउंड्री किधर तक है? बाउंड्री देखो, ये बाउंड्री किधर तक है? इस इंटरफेस तक है, राइट? यस सर. 0/1. उसके बाद तुम्हारा कौन सा एरिया स्टार्ट हो रहा है? एरिया 0. और एरिया 0 का बाउंड्री किधर तक है? ये गेटवे 2 का FS0/0 तक, राइट? यस सर. उसके बाद तुम्हारा कौन सा एरिया स्टार्ट हो रहा है? एरिया 601. और इसका बाउंड्री ये सर्वर तक. तो कौन सा राउटर का सारे इंटरफेस एक ही एरिया पे है? Which router all the interface is connected to one single area? एरिया 0. राउटर 1 पे देखो, राउटर 1 का दोनों इंटरफेस एक ही एरिया पे है ना? सेम एरिया पे, करेक्ट? सेम एरिया पे. यस सर. एंड इसका ये इंटरफेस कौन सा एरिया पे है? 501 पे. और ये वाला इंटरफेस कौन सा पे है? एरिया 0 पे. सो वी कैन नॉट कॉल दिस राउटर एज इंटरनल. ये इंटरनल राउटर नहीं. गेटवे 2, ये इंटरफेस कौन सा एरिया पे है? एरिया 0 पे. और ये इंटरफेस कौन सा एरिया पे है? एरिया 601. सो वी कैन नॉट कॉल दिस एज इंटरनल. It means what? Internal router means any router whose all the ports belongs to single area. Okay. Single area पे अगर होता है, वो एरिया 0 नहीं भी होने से भी चलेगा. Okay. एरिया 0 अगर नहीं भी रहता है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं. उस राउटर को इंटरनल राउटर ही कहा जाता है. Understood? यस सर. Backbone router means what? Any router whose at least one port connects to area 0. It is a backbone area. जैसे कि इधर पे तुम्हारे ये राउटर है, ये राउटर का ये इंटरफेस कनेक्ट्स टू एरिया 0, राइट? सो दैट इज योर बैकबोन राउटर. We call it
backbone router. Similarly, router 1 का ये दोनों इंटरफेस एरिया 0 पे कनेक्टेड है, करेक्ट? Yes, So sir. that is also backbone router. And similarly, this gateway 2, this interface also is connecting to area 0. So that is also backbone router. So it means what? It means that any router whose at least one port connects to area 0, that is your backbone router itself. Okay. इधर वो सारे तुम्हारे राउटर्स के एक एक इंटरफेस एरिया 0 से कनेक्टेड है, इसलिए सारे राउटर्स तुम्हारे बैकबोन राउटर्स। Understood? Then we are having this area border router. Okay, ABR. ABR basically means any router which is used to connect multiple areas together. For example, this gateway 1 is connecting area 501 and it is connecting area 0. So these are the two areas which is connected via which router? Gateway 1, right? That is why we call it ABR. Okay. The router which is exactly located in between two areas. Okay, or multiple areas. For example, gateway 2. This interface is connecting to this area 0. This interface is connecting to area 601. So we can call this as area border routing because it is connecting both area 0 and area 601 together. So any router which is located in between the border of multiple areas, that is your area border router, or any router which is connecting multiple areas together, that is your area border router. Okay. But we cannot call router 1 as APR. Okay. We cannot call. Why? Because router 1, both the interface connects to area 0. It is internal router. Similarly, you are having the autonomous system boundary router. Okay, ASB. Now, autonomous system boundary router means that any router which is running OSPF. So this is our OSPF network. And from OSPF, we are connecting to a router or to a network which is running a different routing. For example, EIGRP. Okay. So this is my router which is running OSPF. This is the router which is running EIGRP. So the router which is connecting from OSPF to EIGRP, that is what we call as ASPF. For example, let's say that we have a network here, and in this network we are running RIP. So we have a router here, okay? And this router from OSPF is connecting to this router. Okay. So since this gateway 2 is not running RIP, it is running OSPF, that is why we can call it ASPF, because it is connecting from OSPF to RIP network. So from OSPF to a different routing network when you are connecting, that is one exactly the router which is connecting to that separate network or to a different routing network. That is what we call as ASP, autonomous system boundary routing. These are the four types of routers you are having: internal, backbone, area border router, and autonomous system boundary router. Now, OSPF uses wildcard mask. That is the formula what we use to calculate wildcard mask here. That is our class A, class B, and class C. That is what OSPF uses to identify the network in host space. Okay. It is exactly the opposite of subnet mask. So class A, class B, and class C wildcard mask, it is figured out using the formula. Okay. So whenever you are configuring OSPF in Cisco IOS, then either you can configure using the subnet mask, or you can calculate the wildcard mask and you can configure it. Okay. In both ways you can do that. Similar like EIGRP. Okay. Because if you use the subnet mask in the OSPF configurations, automatically it will be converted to wildcard by Cisco IOS. Cisco IOS will convert it. Okay. So this is something what you are getting an advantage. Okay, that you don't have to calculate the wildcard mask and configure it.
You can directly configure subnet mask and automatically it will be configured into wildcard. Now, like EIGRP, OSP also builds neighbor relationship, which is called adjacency. Okay. Every single router will form neighbor relationship. For example, gateway 1 will form a neighbor relationship with router 1, router 1 will form neighbor relationship with gateway 1. Router 1 will form neighbor relationship with gateway 2, gateway 2 will form neighbor relationship with router 1. So when there is neighbor relationship, that is what we call adjacency. This is when exactly routing table informations will be shared. Okay. So routing table informations only is getting shared when an adjacency is formed. Adjacency means neighbor relationship. So for building the neighbor relationship, sharing the routing table, OSPF uses this multicast addresses for communication purpose. Okay. When they will be sending their routing table informations, they will be using these addresses to communicate with other routers. We call OSPF as a link state routing protocol. Why? Because it maintains this database, which is called LSTP, link state database. This database basically contains information about all the links your router is connected to. Okay, these are all links. Link. These are all links. Okay, by which your router is connected to different networks in different areas. So, which particular interface of this gateway 1 is connected to this link on LAN 1? What is the network address of this particular link? What is the IP address which is configured on the port of this link? This link belongs to which area? These are all the informations about links which are stored in every single router's LSTP, that is the database. Every single router maintains it. Okay. And this LSTP containing all the informations about the links of these routers. They are getting basically shared. Okay. Routers, they share it. They share this database with each other. Okay. Now, how exactly this database is getting shared? That is using LSA. Okay. Now, what is LSA? LSA is nothing but link state advertisements. Okay. That is to exchange the database informations between routers. OSPF uses these link state advertisements, which are nothing but simply just packets. Okay. ये तुम्हारे OSPF के packets होते हैं. जैसे कि EIGP में तुम्हारे 5 types of packets हैं. Hello packet, update packet, query packet, reply packet, and acknowledgement packet. Similar like that you are having in OSPF, these are called link state advertisements, which are nothing but simply just OSPF packets only. Okay. तो इन्हीं को यूज करके डेटाबेस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है. It maintains 3 tables. One is called neighbor table, which contains a list of all the neighbors a router is connected to. For example, gateway 1 का neighbor कौन है? Router 1. Router 1 का neighbor कौन है? Gateway 1 and gateway 2. Gateway 2 का neighbor कौन है? Router 1. So these are all the neighbors informations. It is maintained in the neighbor table. The topology table, it basically stores information about the primary and secondary routes of your entire topology. मतलब अगर मेरा gateway 1 gateway 2 से connected है using a cable to reach LAN 4, then this is your primary, the primary path, primary route. And you have another route that is via router 1 via gateway 2 to LAN number 4. So that is your secondary route. Secondary. So when we talk about the topology table, topology. Topology table. Then our topology table contains both the primary information as well as the secondary information as well. Okay. So primary route and the secondary route, both will be available in the topology table. But if I talk about our next table, which is the shortest part table, SPT, or the routing table in short, the routing table doesn't contain the secondary route informations. Okay. तो जो भी तुम्हारा secondary routes होगा, ये सारी informations तुम्हारे topology table पे तो रहेंगे, लेकिन in the routing table you will not be having it.
because routing table contains only the best route. जो भी तुम्हारा primary route होगा, always that information will be there. Okay, so this is where you were seeing clearly the difference. Okay, that in between topology table and routing table, primary secondary routes informations are stored in the topology table, whereas only the best route information, that is the primary informations are stored in routing table. That is your shortest part table. Okay, तो सारे routers के पास ये 3 tables होते हैं. Now configuration syntax, that is your router OSPF, then process ID. Now process ID you can take any number. Okay, तुम्हारे पास 1265535 तक का number है range. You can take any number whatever you want. So this is where exactly what I mean the process ID here. Okay, then the router ID. Router ID 32-bit value you have to give. So make sure that this value is unique. Okay, मतलब जो router ID तुम इस router पे दे रहे हो, same router ID तुम इधर पे नहीं दे सकते. It should be different. Okay, so every single router it should be identified uniquely. Then network address, subnet mask, wildcard mask. So that is basically the same command what you were having from EIGRP. Okay, तो अपना जो भी connected network है उसको इधर पे डालना है. Then subnet mask or wildcard mask, any of this you can configure. And after that, area and area ID means whatever network is in whatever area, that area information you will have to give with the area command. For example, level 1 network 0 belongs to area number 50. So this is what you will be typing here. Okay, so here 192.168.100.0. Subnet mask will be 255.255.255.0. Then you will give area command and area number 50 like that. So remember that it's all about connected networks. Dynamic routing, it's all about connected networks. So whatever networks are connected to your router, that network belongs to which area? Okay, this is what you need to figure out from the topology, and you will have to configure it. तो सबसे पहले तो अपने टोपोलॉजी को देखना है, कौन सा नेटवर्क किधर पे है, कौन सा एरिया पे है, वो आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद जो जो राउटर के साथ जो जो नेटवर्क कनेक्टेड है, वो नेटवर्क कौन से एरिया पे है, उसको इधर पे डाल देना है कॉन्फ़िगरेशंस के तौर पे. ऑलराइट, then you are having the log adjacency changes. Now this command is required in order to get to know adjacency related notification. For example, if there is a neighbor relationship between gateway 1 and router 1, then we should get a notification that router 1 is the neighbor of gateway 1. If some problem is there with gateway 1 and router 1 neighbor relationship, suppose this neighbor is down, then also we should get a notification. Okay. तो अगर कोई नाइबर बनता है या फिर कोई नाइबर डाउन हो जाते हैं, तो फिर we should be getting a notification about it. That is why exactly this particular log adjacency command is used. Okay. Now this command is by default, it is there. Means whenever you are configuring OSPF, by default it is there. So if you don't want, you can ignore this command. Okay. अगर नहीं चाहते हो ये कमांड देना तो नहीं देने से भी चलता है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड है. ओके, तो जब भी OSPF कॉन्फ़िगर करोगे तो ये कमांड बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड हो जाता है. And lastly we're saying exit. Okay, so configuration is very much simple. Okay, process ID डिफाइन करो, उसके बाद तुम्हारे 32-bit राउटर आईडी को डिफाइन करना है. देन जो जो नेटवर्क तुम्हारे कनेक्टेड है, जो जो एरिया पे है, उसको डिफाइन कर देना है. लास्टली ये log adjacency changes अगर डालना चाहते हो तो यूज कर सकते हो. If you don't want, you can simply just leave it. It will work. And lastly, exit. So verification commands wise, we are having the show IP route, that is to check the routing table, show IP protocols, that is to check that which routing protocols are running on your router. For example, if you are running RIP, if you are running EIGRP, if you are running OSPF, all these 3 routing protocols running on your router, then you can check each and every single of these routing protocol informations individually using show IP protocols command. Okay. तो ये बेसिकली देखेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे तो फिर ये कमांड क्या है. show IP this is to check the table. अगर तुम नाइबर टेबल को है तुम्हारे राउटर पे, then you can use this show IP neighbor command. It will display the available list of all the neighbors to whom your router is connected. Show IP OSPF basically gives you the process information. जैसे कि तुम्हारा ये process ID है,
इस प्रोसेस आईडी के अंडर पे जो जो तुमने डिफाइन किया है वो सारी इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड कर देगा, है ना, शो आईपी ओएसपी. Very important command which also displays that how many interfaces we have. जैसे कि एरिया 501 पे हम लोग का कितना इंटरफेस कनेक्ट है, 0 पे कितना इंटरफेस कनेक्टेड है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं यूजिंग शो आईपी. is running. Your voice is breaking, sir. The fish. Your voice is breaking. Tell me. Voice is breaking. Just hold on. Yes. नेटवर्क के इश्यूज आ रहे हैं कुछ. Right now, can you hear me properly? Yes, Not clear, sir. but you are not clearly audible. एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ. All right. Now, can you hear me properly? Yes, sir. Yes, sir. Now you are ये clearly audible. नेटवर्क के इश्यूज आ रहे हैं ऑब्वियसली. अच्छा, तो शो रनिंग कॉन्फ़िग. ओके, शो रनिंग कॉन्फ़िग बेसिकली क्या है? जो भी कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे राउटर पे चल रहा है बाय डिफॉल्ट, उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशंस को देखने के लिए शो रनिंग कॉन्फ़िग यूज. ओके, व्हाटएवर कॉन्फ़िगरेशन इज रनिंग ऑन योर राउटर करंटली, ओके, उस सारे कॉन्फ़िगरेशंस को देख सकते हो यूजिंग शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड. So we'll see how to use these verification commands in a moment. Okay. अभी ये रहा तुम गेटवे 1 के कॉन्फ़िगरेशंस. ये तुम्हारा बेसिक आईपी कॉन्फ़िगरेशंस और उसके बाद OSPF. Okay, so that is your router OSPF 65111. I'm taking simply just a number from this range. Okay, तुम कौन सा भी नंबर यूज कर सकते हो in between 1 to 65535. So router ID here is 100.1.1.1. That is to identify gateway 1. Network is 192.168.100.0. That is our LAN 1, which is in area 501. That is our LAN 2, which is in area 0. Both these LANs are connected to gateway 1, but they belong to different areas. So we're giving their area information here. Okay. तो जैसे कि इधर पे तुम्हारे पास LAN 1 है 100.0, area 501, LAN 2 101.0, that is in area 0. So that is only what you were configuring here. After that, log HCC changes, exit. Then moving on to the router 1, you are doing the configurations of IP. Then router OSPF 65111. Okay. तो कौन सा भी तुम process ID दे सकते हो इधर पे. Same process ID, that is not the requirement. Okay. ये mandatory नहीं है. If you want, you can configure the same process ID. If you want, you can configure separate process ID as well. Router ID, that is 100.1.1.2. इसका router ID मैंने .1 दिया था, तो इसका .2 डाला. Then this is our two networks, LAN 2 and 3, which is in area 0. Okay, तो topology के हिसाब से देखो, that is our LAN 2 and 3, which is in area 0. So that information we are giving it here, and after that log HCC changes, exit. Then we're moving on to the gateway 2, finishing up the IP configurations. Then router OSPF 65211, that is our router ID, and .1.1.3. Network address we have 102.0, that is our LAN 3 in area 0, and 103.0, that is in LAN number, area number 601. So if you see the topology, that is LAN 3, which is in area 0, and that is our LAN 4, which is in area 601. Okay, then log HCC changes and exit. So we're going to be applying the same configurations. Okay, यही सारे configurations मैं copy करके paste कर दूंगा उधर पे. Copy. Basic router दूसरा वाले प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ. इस पे डालते हैं. ओके, सो सबसे पहले इसका इरेज कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशंस.
ये router 1 है, and that is your last router, gateway 2. Okay. So that is our area 501, and this two is our area 0, and that is our area 601. So going to this router here, saying no, and pasting all the configurations from here. Copy, paste. That's it. All of you take the screenshot of it. Taken. Yes, sir. All right. Moving on to the next one. That is our router 1 configuration. Copy. Going to the next router. This is the one. Say no here first and paste it. Now take the configuration screenshot. Taken. Yes, sir. Everyone taken that? All right. Yes, sir. Then the last one. Gateway 2. Copy and paste. So that is your no and paste. Take the screenshot. Now you will have to wait for a neighbor message to come. Okay, because OSPF it is a little bit slow. Okay, protocol compared to RIP, compared to EIGRP, it is in fact the slowest one among these three. So you will have to wait for certain time. You will get a message. एक message आएगा neighbor message. Now, can you see this message here? Neighbor 100.1.1.2. If you see very carefully, this 100.1.1.2 neighbor is which router? Router 1, right? Yes or no? Yes, This sir. router is router 1. Yes. Okay. So that is our gateway 2, which has built neighbor relationship with this router. Okay. So this message is coming. It means that if I check the neighbor table now, so I'll be host of neighbor. Right now you can see the neighbor ID and the neighbor's IP address. You can see very carefully. Okay. 192.168.102.1, that is the router 1 IP address, and this is the neighbor ID we have given to this router. You can check it. You can also use this command called show IP host. Show IP properties. This command basically gives you the process ID information. So this is our process ID, that is our router ID. We are doing routing for these two connected networks, 102 and 103, which is in area 0 and area 601. And in our entire topology, total how many number of routers running OSPF? That is total 3 routers. You can see all these 3 routers, router ID informations here. That is your routing information source. Okay. So all these are coming over here as routing information source. Okay, your entire topology in which you have all the routers, all their routers, router ID you will see over here. Take the screenshot of it. Taken.
Yes, sir. Then this is our show IP was. Okay. This particular command, it basically gives you lots of informations. Number one, it gives you the process ID informations, the router ID. What type of router is this? It's an area border router. Okay, this gateway 2. Why it is an area border router? Because it is connecting to area backbone and area 601. Okay. If you see your topology very carefully, this is your gateway 2 connecting to LAN 3 in area 0, connecting to LAN 4 in area 601. So it is connecting multiple areas together. That is why it is an area border router. Okay. तो ये भी तुम्हें इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ रहा है कि नंबर ऑफ इंटरफेस इन दिस एरिया इज 1, नंबर ऑफ इंटरफेस इन एरिया 601 इज 1. सो दोनों तुम्हारे एरियाज पे एक एक इंटरफेस है इस राउटर के. सो दिस इज आवर इंटरफेस 0/0 which is in LAN 3 in area 0, and this is our interface in LAN 4 which is in area 601. So only one interface here, only one interface here. So that is what you can see over here in the output. Take the screenshot of it. Taken. Yes. All right. Now this is your command show running config. Okay. This command basically gives you your running configuration. Okay, whatever configurations is currently running on your router, you can simply just find it here. Okay, so simply just keep pressing enter unless you see all the configurations of OSPF. Here you can see we have configured OSPF, but focus here. What is happening here? That is your subnet mask to wildcard mask conversion. If you see very carefully, this is our configurations, what we have configured in gateway 2. Specifically in the network address, you can see that we have this 255.255.255. We have written the subnet mask. But if you see in the OSPF configurations, here you can see that it is the wildcard mask. Okay, it is the wildcard mask. So this subnet mask, what we have configured, it is getting converted by Cisco iOS. Okay, in wildcard automatically. Okay, so that is one flexibility what Cisco iOS is giving you. That is, if you don't want to calculate wildcard mask, you can directly configure subnet mask. Automatically, it will be converted. So that is what show running config basically gives you. Just keep pressing enter unless you see the end. Okay, and now it is time to check the routing table. So that is our shortest path table, show IP route, and it gives you all the best routes. So two are your connected network. So that is 102.103. This is your 100.0, which is basically this network belongs to which LAN? LAN 1. LAN 1 belongs to which area? Area 501, right? Yes, sir. Yes, sir. This is in 501. And this area belongs to which? LAN 2. Area 0, right? Area 0. So your gateway 2 is connected to which areas? Your gateway 2 is connected to which areas? One is area 0 and one is area 601, right? This is where your gateway 2 is connected. Correct? So you are getting this information, this LAN 1 information, it is outside your area, right? In area 501, you don't have gateway 2 connected. So gateway 1 is connected to area 501, but gateway 2 is not connected. So when you get any information which is outside your area 0 or outside your area 601, this is what we call inter-area route. Okay, this IA basically stands for OSPF inter-area. Inter-area means any area in which your router doesn't belong to. Okay, it doesn't belong to that area. So outside your local area, whenever you are getting any informations,
whenever you are getting any informations. This is when you call it inter-area, OSP of inter-area. Understood how this IA is coming here? All of you? Yes, sir. बोलो, अगर कोई दिक्कत है बोलो। इंटर एरिया का मतलब है कि अगर तुम्हारा राउटर ओके जो भी एरिया पे कनेक्टेड है उस एरिया के बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, मतलब दूसरे एरिया से, जिधर पे तुम्हारा राउटर कनेक्टेड है, अगर उस एरिया से तुम्हारे राउटर पे कुछ इंफॉर्मेशन आते हैं तो तुम्हारा राउटर उस एरिया के इंफॉर्मेशन को कंसीडर करता है एज इंटर एरिया। ओके, जैसे कि अगर टोपोलॉजी देखते हैं, ओके, इफ यू सी द टोपोलॉजी, ये देखो, ये लर्न नंबर 1 कौन सा एरिया पे है? 501 पे। 501 गेटवे 2 कौन सा एरिया पे है? एरिया 0 पे है। एरिया 601 पे है कि नहीं? ये इन दोनों एरिया से कनेक्टेड है, लेकिन इस एरिया से तो नॉट कनेक्टेड है, राइट? है कि नहीं? तो इस नेटवर्क के इंफॉर्मेशंस को गेटवे 2 कैसे ट्रीट करेगा? हाउ दिस गेटवे 2 विल ट्रीट दिस नेटवर्क? ये बाहर का नेटवर्क है ना, एरिया 0 के बाहर का नेटवर्क है, करेक्ट? एरिया 601 का बाहर का नेटवर्क है। So that बाहर का नेटवर्क is called as inter area route. Getting the point? Okay. जो तुम्हारा एरिया के बाहर से आ रहे हैं, okay, जो भी नेटवर्क इंफॉर्मेशन, that is what you call as inter area route. Always. Okay. So what we are going to be doing now is performing ping test. Ping करके देख लो 192.168.173.2. That is our server 2 IP address. You are getting the reply, right? Yes. Receiving packets. और अभी पिंग करके देख लो 192.168.173.3. That is server 1 IP address. We are also getting the reply. It means that our OSP of communication is perfectly working. Okay, सारे routers ठीक तरीके से OSP of routing कर रहे हैं। इसके वजह से हम लोग communication कर पा रहे हैं between LAN 1 to LAN number 4, which are 2 non-backbone areas. Okay, ये बीच वाला तुम्हारा backbone है और ये तुम्हारा non-backbone है। Non-backbone to non-backbone, you are communicating via the backbone area. Okay. So all of you take the screenshots of all these things. Put a screenshot please. Take it. Taken? Yes, sir. Yes. Then take this next. Done. Done. Then take the next. Taken. Yes. Then gateway 1 के configuration lobby. Then router 1. Taken. And lastly gateway 2. Finished? All that. So that is your OSP. Okay. अभी टोपोलॉजी का भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका. Take the screenshot of this. Taken? Yes, sir. Yes. Everyone taken, right? अभी नीचे का भी लो.
Completed? Yes. All right. So now we are moving on to the next concept, which is your SCL, access control list. So what is this SCL? SCL अभी है क्या? All right. So this SQL basically stands for access control list. Okay. अभी ये यूज क्यों किया जाता है? That is to filter the traffic. ट्रैफिक क्या है? जो पैकेट्स हम लोग सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, वही होता है ट्रैफिक. ओके, जो नेटवर्क के थ्रू एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जाता है, फिर दूसरे डिवाइस से नेक्स्ट डिवाइस पे जाता है, ऐसा करके डेस्टिनेशन पे जाता है. So when you are sending anything from your machine and it is going to the destination, okay, that is what we are calling as traffic, which is flowing around the network from one device to another device like that. So this traffic we need to filter it. Filter मतलब परमिट करना या फिर ब्लॉक कर देना. okay. जैसे कि अगर तुम चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर मशीन के ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर मशीन के ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हो, पैकेट्स को डिनाई कर सकते हो. okay. ये सारे बेसिकली फिल्टरिंग पे आते हैं. okay. We're using all this SCL in filtering traffic in network. So SQL basically होता क्या है? That is your rule table, a table of rules where we are defining all the rules like this, like block PC0 from communicating to server 1. Then we are giving some parameter rule like that. Okay, rules बनाते हो basically तुम्हारे ये rule table है. Okay, इस rule table पे तुम rules बनाते हो. अभी बहुत सारे rules क्या करते हैं? Filter करते हैं traffic. So whenever we are creating any rule in the rule table called SQL, there is a rule by default is available. It's called implicit denial rule. Okay. So implicit denial rule means what? It will block every single network traffic. Okay. मतलब जो भी ट्रैफिक तुम्हारे सिस्टम से जा रहे हैं या फिर तुम्हारे सिस्टम पे आ रहे हैं, वो सारे ट्रैफिक को ब्लॉक कर देते हैं. So block means what? Communication will not be there. Okay. अब ये rule जो है invisible rule है ये basically. Invisible means you cannot see that. Suppose you have created an SCL with like what 50 rules. Okay. तो ये जो रूल रहेगा, ये implicit denial rule, it basically sits at the very end of your rules. Means suppose ये तुमने दो रूल्स बनाए हैं. ओके, अभी दो रूल्स बनाने के बाद ये तीसरा वाला जो रूल होगा, ये बेसिकली तुम्हारा implicit denial rule. ओके, and what exactly it does, by default it blocks everything. ओके, मतलब जो भी नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहे हैं तुम्हारे नेटवर्क पे, सारे कम्युनिकेशंस को ब्लॉक कर देता है. मतलब एंटायर नेटवर्क ब्रेकडाउन. ओके, कम्युनिकेशन किधर से भी किधर पे नहीं होगा. सो दैट इज a problem, okay, with SEO. So what we do is we bypass this implicit denial. bypass करते हैं उसको. okay, भाई bypass कैसे करते हैं? permit rule लगा के. This permit rule is required to bypass this implicit denial. okay, तो जब भी तुम SQL क्रिएट करो तो फिर तुम्हें परमिट रूल लगाना ही है. If you are not configuring it, it means this machine will be blocked. जैसे कि PC0 इधर पे ब्लॉक है, और इस PC0 के साथ बाकी जितने भी machines है वो सारे भी ब्लॉक हो जाएंगे. तब मतलब तुम्हारा इंटर नेटवर्क ब्लॉक हो जाएगा, तो कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा. तो ऐसे बेसिकली वी डोंट वांट दिस टाइप ऑफ फिल्टरिंग. ओके, हम लोग कैसे फिल्टर करते हैं? जैसे कि किसी मशीन को किसी मशीन के साथ फिल्टर मतलब ब्लॉक कर देते हैं, या फिर किसी नेटवर्क से किसी नेटवर्क पे कम्युनिकेशन परमिट करते हैं. तो ऐसे होता है. ऐसा नहीं होता कि सारे कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिया, तो नेटवर्क बनाने का फायदा ही नहीं. So what exactly is required? That is permit rule. Okay, this is always mandatory to overcome the implicit denial rule, which is always invisible. So every single rule what you create in this rule table, it is identified using a rule number. These numbers are called as sequence numbers.
So this rule 1, rule 2, rule 3, these numbers what you are seeing here, these are called sequence numbers, which uniquely identifies every single rule in this particular rule table. Okay, मतलब ये तुम्हारे जो रूल टेबल है जिसमें तुमने सारे रूल्स बनाए हैं, हर एक रूल को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने के लिए ये तुम्हारा सीक्वेंस नंबर ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट करके देता है. Okay, it means that you don't have to define it. However, if you want, you can configure these numbers. Okay, ये मैनुअली भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट बेसिकली मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं क्योंकि सिस्टम ही ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है. जब भी तुम रूल्स बनाते हो, ऑटोमेटिकली सिस्टम विल जनरेट दिस नंबर्स and it will be used to uniquely identify every single rule in the rule table. So that is your sequence numbers. Now, what exactly are the objectives you are having? Matching the traffic, filtering the traffic. कोई भी एसएल बनाने का यही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होता है. ओके, पहले तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि किसको तुम्हें ब्लॉक करना है या फिर किसको तुम्हें परमिट करना है, किसका कम्युनिकेशन तुम्हें रोकना है, किसका कम्युनिकेशन तुम्हें अलाउ करना है. ओके, दैट इज ऑलवेज यू नीड टू मैच. एक बार मैच हो गया, एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सोर्स से ये डेस्टिनेशन का कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए या फिर इस डेस्टिनेशन से इस सोर्स का कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, देन ओनली यू कैन बेसिकली फिल्टर इट. So matching the traffic always is done based on wildcard bits of 0s and 1. 0 का मतलब होता है wildcard पे match bit and 1 का मतलब होता है don't match bit. जैसे कि सिंगल होस्ट आईपी एड्रेस है, मान लो कि ये तुम्हारे PC0 का आईपी एड्रेस है 192.168.100. अभी इस एड्रेस को अगर हम लोगों को मैच करना है यूजिंग वाइल्डकार्ड बिट्स, देन ऑलवेज वी नीड टू गिव 4 zeros. 4 zeros का मतलब होता है कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट ये बेसिकली एसीएल मैच करेगा और मैच करके आइडेंटिफाई करेगा सोर्स को डेस्टिनेशन पर. ओके, 4 zeros always you need to provide. Okay, so that is, just think of it like some guideline. Okay, you are having whenever you are matching any particular IP address of a host, then always you need to give 4 zeros. It will specifically check all the 4 octets of the IP address and it will filter the traffic. लेकिन अगर हम लोग नेटवर्क एड्रेस को मैच करना चाहते हैं, देन फॉर मैचिंग द नेटवर्क एड्रेस वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला, जैसे कि 255.255.255.255. दैट इज व्हाट वी हैव द फॉर्मूला. And minus subnet mask, so that is our class C IP. So we have the class C subnet mask of it getting subtracted. So that is 255.0. So that is our wildcard of 0.0.0.255. So this is your wildcard bits, which means that first, second, and third it will be matched. Means the first, second, and third will be matched, and this last 255 means this 0 will not be matched, because 255, if you convert into binary, you are getting 8 ones, and 8 ones in wildcard means it doesn't match. Okay. तो नेटवर्क एड्रेस अगर तुम्हें मैच करना है तो सेम वाइल्डकार्ड मास्क का फॉर्मूला यूज करना है, जो कि एचआरपी या ओएसपी कॉन्फ़िगरेशंस पे हम लोगों ने किए थे. और अगर तुम्हें सिंगल होस्ट के आईपी को मैच करना है, देन ऑलवेज यू नीड टू गिव 4 zeros. तो एसीएल के तुम्हारे कैटेगरीज होते हैं. ओके, 2 कैटेगरीज होता है, एक होता है नंबर्ड, एक होता है नेम्ड. ओके, नंबर्ड एसीएल के जो कैटेगरी होते हैं और नेम्ड एसीएल के, इनमें डिफरेंसेस ये है कि ये जो टेबल तुम बना रहे हो, ओके, जिसमें तुम सारे रूल्स डिफाइन कर रहे हो, ये तुम नंबर से बना सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे न्यूमेरिक नंबर्स हैं. यूजिंग दिस नंबर्स यू कैन क्रिएट दिस पर्टिकुलर टेबल. ओके, और नेम्ड एसीएल पे तुम इस टेबल को एक नाम दे सकते हो, जैसे कि ब्लॉक प्लांट. ब्लॉक प्लांट ये इस टेबल का नाम है. ओके, जिसके अंदर पे तुम सारे रूल्स को डिफाइन कर रहे हो. सो you can basically create your ACL either in a numbered manner or in a named manner. Okay, it is totally up to you and the requirement, obviously. Without requirement, हम लोग ACL configure नहीं कर सकते. So that is one like what significant difference you are having, that you are using numbers to create your ACL or you are using your name, okay, or any name to create your ACL. Another difference you are having, that numbered ACL cannot be edited. मतलब अगर तुम edit करना चाहते हो, ओके, मान लो कि तुमने 50 रूल्स बनाया है इस पर्टिकुलर टेबल को, और रूल नंबर 1 पे तुमने कुछ गलती कर दिया. ओके, गलती कर दिया मींस मे बी इट शुड बी अलाउड.
ओके, ब्लॉक की जगह पे तुम्हें अलाउ करना था, बट बाय मिस्टेक यू हैव गिवन द ब्लॉक। ओके, तो इसका मतलब है कि रूल नंबर 1 को मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ओके, एंड देन अगेन वी हैव टू क्रिएट रूल नंबर 1। ओके, तो ये जो एडिटिंग जो है, एडिटिंग, ओके, एडिटिंग, ये एडिटिंग बेसिकली तुम नहीं कर सकते इफ इट इज अ नंबर डिस्प्ले like 1 2 3 4, if you are using numbers to create it, then you cannot edit it. It is not possible. If you want to edit your number DCL, then you have to delete all the rules. मतलब सारे rules को delete करके फिर से तुम्हें rules create करने पड़ेंगे। Okay, so it basically consumes time. Okay, time consumption is where the time consumption. टाइम कंजम्पशन कैसे? जैसे कि मान लो कि इधर पे मैंने 50 रूल्स बनाया और मैंने इस रूल नंबर 1 पे कुछ गलती कर दी है। ओके, कुछ मिस्टेक कर दिया इधर पे, मिस्टेक। तो इसका मतलब है मेरा रूल 2 रूल 3 बाकी सब ठीक है, लेकिन रूल नंबर 1 पे कुछ गलती कर दी। इसका मतलब है मुझे ये रूल 1 रूल को अगर मुझे करेक्ट करना है, ओके, एडिट, इफ आई वांट टू एडिट 1 रूल, इट मींस आई विल हैव टू डिलीट, I will have to delete remaining 99 remaining 49 rules, remaining 49 rules। ओके, ये 49 रूल्स पे कुछ भी गलती नहीं है। ओके, पूरा करेक्ट है, इस रूल पे सिर्फ गलती किया, लेकिन मुझे ये रूल को एडिट करने के लिए बाकी सारे 49 रूल्स को मुझे डिलीट करना पड़ेगा। मींस ये जो टेबल है, इस टेबल को ही डिलीट कर देना है मुझे। So problem is coming from the perspective of consuming time here. Okay, अगर मुझे एडिट करना है, पूरा SQL को डिलीट करके फिर से करना है इन नंबर से, but if it is named SQL, then I can simply edit this rule only. Okay, ये मुझे डिलीट नहीं करना पड़ेगा। रिमेनिंग 49 रूल्स ठीक है, तो इनको मुझे हाथ ही नहीं देना है, सिर्फ इस वाले रूल को डिलीट कर देते हैं और फिर से रूल नंबर 1 को क्रिएट कर देते हैं, रूल 1। So that is something what you are getting in named SQL. Remember that. Okay. So every single SQL always contains two conditions. One is called permit, one is called deny. Permit का मतलब क्या होता है? Allow. Okay. Permit means allow. और block का मतलब क्या होता है? Deny. Deny. Okay. So whatever traffic you want to allow, you permit. Whatever traffic you don't want to allow, it block. So that is your permit and deny. These are two conditions. Always must exist in a rule. Because in an SQL, a rule which is created without any condition, that is not considered as a valid rule. Okay, so that is always, you need to define it in every single rules. Now we're having these two types of SQL. One is called standard and one is called extended. Okay, अब ये दोनों types जो है, ये numbered पे भी है, named पे भी है। मतलब standard numbered SQL भी है, standard named SQL भी है, extended numbered SQL भी है, extended named SQL भी है। अगर हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड के बीच में, so the difference is coming from the perspective of how these two types of SQL matches the traffic, मतलब कैसे मैच करता है ट्रैफिक को। जैसे कि अगर स्टैंडर्ड SQL देखते हैं तो फिर स्टैंडर्ड SQL always using source IP informations to match the traffic. For example, sender कौन है? Who is the sender? Who is the sender? Who is the sender? या फिर who is the source? ओके, तुम्हारा जो स्टैंडर्ड SQL है, ये बेसिकली इसी क्वेश्चन के ऊपर ही मैच करता है ट्रैफिक। ओके, किसने भेजा है ट्रैफिक, किसने पैकेट सेंड किया है, ओके, उसी के ऊपर। तो सोर्स IP जो होते हैं, सेंडर के IP जो होते हैं, उसी के ऊपर स्टैंडर्ड SQL बेसिकली मैच करता है ट्रैफिक। लेकिन एक्सटेंडेड SQL जो होता है, ये बेसिकली बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ओके, बिकॉज यू कैन मैच द ट्रैफिक बेस्ड ऑन सोर्स, डेस्टिनेशन। ओके, मतलब कौन से सोर्स से कौन से डेस्टिनेशन पे कम्युनिकेशन हो रहा है। प्रोटोकॉल सच एज TCP प्रोटोकॉल है, UDP प्रोटोकॉल है, ICMP प्रोटोकॉल है। ये ICMP बेसिकली इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट
control, message, protocol. ये बेसिकली पिंग यूज करता है। जब भी हम लोग पिंग यूज करते हैं, ओके, तो पिंग ये ICMP प्रोटोकॉल को यूज करता है, ओके, टू सेंड इट्स पैकेट्स। ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग स्टैंडर्ड SCL क्रिएट करके फिल्टर कर सकते हैं ट्रैफिक। सर्विस है, अभी सर्विस है कौन सा है, जैसे कि तुम्हारा वेब सर्विस है, DNS सर्विस है, फाइल शेयरिंग सर्विस। ये सर्विसेज के नेम के ऊपर भी हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। पोर्ट नंबर, जैसे कि तुम्हारा HTTP का पोर्ट नंबर 80, FTP का पोर्ट नंबर 2021, SMTP पोर्ट नंबर 25। These are all port numbers based on which you can filter the traffic. Okay. Packet type मतलब request packet है या reply. Okay. Request है या reply. Based on this packet types also we can filter. Okay. Extended SCL is giving you much more flexibility, much more options or parameters based on which you can easily filter traffic from source to destination. लेकिन अगर स्टैंडर्ड SCL के बारे में बात करते हैं तो स्टैंडर्ड SCL हमेशा सोर्स IP के इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे फिल्टर करता है. So that is what you are having the clear differences between the standard and extended SCL. तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड SCL क्रिएट करते हैं तो नंबर्ड पे ये हम लोग का रेंज होता है स्टैंडर्ड का 1 to 99. It means that if you take any number in between 1 to 99, this is referred as the standard number SCL. And similarly, the extended number SCL, if you are creating, then you have to take a number from 100 to 199. Okay, मतलब 100 से 199 तक तुम्हारा जो रेंज है ये एक्सटेंडेड के लिए रिजर्व है. And 1 to 99 तक जो रेंज है बेसिकली दैट इज फॉर स्टैंडर्ड SCL. तो तुम्हें हमेशा इन्हीं रेंज में से तुम्हें नंबर लेके स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड नंबर्ड SCL को क्रिएट करना. Now these are the two steps what always we need to follow whenever you are creating your SCL. First of all, you will have to define all the rules. Okay, जो rules तुम्हें define करना है, ये सारे rules तुम्हारी इस टेबल पे define करने हैं. Now, once the rules are defined, that is creating the SCL, then you have to apply the SCL under the interface. मतलब ये जो टेबल पे तुमने rules बनाए हो, इस टेबल पे apply कर देना है. किधर पे? राउटर के इंटरफेस पे. So that is your router here. Let's say this is your router, which is connected to the source here, and in another way it is connected to the destination here. So let's say that this is our interface FS0/0, and this is our interface FS0/1. Okay, so this is your source, this is your destination, and this is the router which is connecting all the source to the destination here. So whenever we are creating the SCL, we need to apply the SCL. Okay, तो अगर इस राउटर पे हम लोग ने SCL कॉन्फ़िगर किया है, उस SCL को तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा. तो अप्लाई करने के लिए तुम्हारे पास डायरेक्शंस होते हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड. सो दैट इज योर इन डायरेक्शन, दिस इज योर आउट. अभी इन डायरेक्शन कैसे होता है? अगर सोर्स डेस्टिनेशन से कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले सोर्स भेजेगा पैकेट इधर पे. ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इन डायरेक्शन पे आ रहा है, इनबाउंड. So this interface is receiving it from source, so that is your in direction. Then the router is sending it to the destination, so that is your out direction. ये तुम्हारे दो directions होते हैं based on which you can apply the SCL. So as long as you are applying the SCL under the interface of your router, that SCL it will work. Okay, अगर तुमने SCL correctly configure किया है और तुमने correct interface पे correct directions पे डाले हैं, then it will work. But if you are configuring in wrong interface, in wrong direction, then it will not work. Okay, so what we need to understand here, that is our source, our destination. Okay, क्योंकि सोर्स के और डेस्टिनेशन के इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इंटरफेस पे इन हो रहा है, कौन सा इंटरफेस पे आउट हो रहा है. Okay, so that is always we need to identify. Okay, तो दो ही डायरेक्शंस होते हैं जिन पे SCL हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. Okay, now there is a guideline for configuring standard and extended SCL. Okay, guideline होते हैं. गाइडलाइन क्या है? So first guideline, that is for standard SCL says, okay, अगर तुम्हें standard SCL
if you want to configure it, so let's say that this is our source, that is our LAN 1, and that is our destination. So whenever you are creating a standard SCL, always you need to configure it closest to the destination. मतलब जो router तुम्हारा destination के नजदीक होगा उसी router पे तुम्हें configure करना है. Okay, whether it is a named SCL or numbered SCL of standard. Okay, always you need to configure it closest to the destination. And whenever you need to configure an extended SCL, so that is the exact opposite of standard, that is closest to source. Okay, तो source के नजदीक जो भी router होगा उस पे extended SCL configure होगा. That is what you are having the guidelines. Okay, हमेशा तुम्हें ये याद रखना है कि standard SCL अगर configure करते हो तो closest to destination आएगा, इस वाले router पे configure होंगे. अगर extended SCL configure करते हो तो इस वाले router पे configure होगा. So all of you take the screenshot of it. पूरा screenshot close कर. Taken. Yes, sir. अभी इसी टोपोलॉजी के ऊपर मैं दिखाता हूँ कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन SCL के होते हैं. ठीक है, तो ये रहा मेरा बेस कॉन्फ़िगरेशन. ओके, मेक श्योर दैट ऑल दिस थिंग्स आर कॉन्फ़िगर्ड ऑन योर राउटर. ओके, मतलब SCL कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले ये सारे कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, हमारा राउटिंग वगैरह ये चलने चाहिए. ओके, तो ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने कर लिया है, राइट, इन गेटवे 1 ऑल दिस राउटर्स. Yes, sir. इस टोपोलॉजी पे हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया. तो इसी टोपोलॉजी पे ये रहा SCL के कॉन्फ़िगरेशंस. SCL configuration. So first of all, what we are doing here is standard numbered and named SCL create करना. ठीक है. So this is how exactly we are configuring. So standard numbered SCL. Okay. So for that we must have a requirement. Okay, requirement होना चाहिए. तो ये रहा तुम्हारा लैपटॉप वन जो कि सोर्स है, source, and this is your LAN 4, which is the destination. Okay. Basically what we are doing is we are blocking this particular laptop one's communication to LAN 4. मतलब कौन सा भी सर्वर्स को अगर ये communicate करना चाहता है, then we are not allowing it, we are blocking it. It is blocked. Okay. लेकिन अगर ये मशीन अगर पिंग करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर ये वाला मशीन अगर कम्युनिकेशन करता है, then we are allowing that communication. Okay. तो इन मशीन से कम्युनिकेशन होगा, but ये मशीन से कम्युनिकेशन नहीं होगा. Okay. This is what exactly the type of requirement you have for configuring standard SCL. Okay. तो लैपटॉप वन को परमानेंटली हम लोग ब्लॉक करना है इन LAN नंबर 4. Means no machine in LAN 4 exactly it can communicate. Okay. तो सबसे पहले हम लोग दे रहे हैं ये नंबर SCL है, तो एक्सेस दिस 10 नंबर ले रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं 192.168.100.2 जो कि ये मशीन का IP है. Single host IP, that is why we are giving the 4 zeros in wildcard, and after that we are giving access this 10 parameter any. Okay, ये any जो है ये basically source का है. Okay, any source means except this 192.168.100.2 we are permitting the rest of the sources. So interface FS0/1 इस router पे configuration करना है, इस वाले interface पे FS0/1, and we are using IP access group command 10 out. So 10 basically is the SCL number we have 10 and the direction in which we are applying it. So how we are saying it is out, because when laptop one is sending anything, it is coming in FS0/1, then it is going out, it is coming in, then it is going out, then it is coming in, and it is going out. Okay. So this is our direction in which we are applying it over here. Once you have applied it, then you will see that configuration is, that communication is totally broken. Means laptop one cannot communicate to any of the servers. Okay. अब सेम चीज हम लोग नेम्ड SCL से भी कर सकते हैं. ओके, ये जो सेम रिक्वायरमेंट है नेम्ड SCL से भी होता है. उसके लिए मुझे IP access standard, then the name of the SCL, which is block laptop one. Okay. Now this name you can give any name.
whatever name you want, you can give it. deny 192.168.100.2 इस मशीन को हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, ये रहा फोर्सी बस वाइल्ड कार्ड पे। परमिट कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द मशीन्स, क्योंकि PC0 PC1 अलाउड होना चाहिए, इसी वजह से परमिट दे रहे हैं। फिर सेम इंटरफेस पे जाके अप्लाई कर रहे हैं, इंटरफेस FS0/1 IP एक्सेस ग्रुप, ACL का नाम है ब्लॉक लैपटॉप 1, तो ये रहा ब्लॉक लैपटॉप 1 और ये डायरेक्शन आउट। तो ये जब हम लोग कर लेते हैं तो इस मशीन का कम्युनिकेशन इधर पे ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं करके दिखा देता हूँ, ओके, बाकी प्रैक्टिस कर लेना ठीक तरीके से। ये स्टैंडर्ड नेम्ड ACL के कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कॉपी करता हूँ मैं और इधर पे गेटवे 2 पे जाता हूँ and let's configure it and I will configure it, पेस्ट कर। ये सारे तुम्हारे कॉन्फ़िगरेशंस पेस्ट हो चुके हैं। अभी ये कमांड डाल के चेक कर सकते हो, शो IP एक्सेस। दिस इज द कमांड टू चेक योर ACL कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो डिनाई आ रहा है, ये परमिट आ रहा है, ये तुम्हारा सीक्वेंस नंबर है, दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाइंग एवरी सिंगल रूल इन दिस रूल टेबल। ओके, तो कैसे पता चलेगा कि ये मशीन ब्लॉक हो चुका है? पिंग करके देखो। ओके, लैपटॉप 1 पे जाओ एंड जस्ट पिंग एनी मशीन like 103.2, you can see that destination host is on this chip. Received 0, ping 192.168.103. See that destination host is on this chip. Okay, मतलब कोई भी सर्वर्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। ओके, तो टोटल हम लोगों ने कितना पैकेट्स भेजे? 4 पैकेट्स भेजा, 4 पैकेट्स मतलब टोटल 8 पैकेट्स भेजा, राइट। सारे 8 पैकेट्स इधर पे आके ब्लॉक हो चुके हैं और ये देख भी सकते हो यूजिंग शो IP एक्सेस कमांड। ये देखो टोटल 8 पैकेट्स सारे ब्लॉक हो चुके हैं, डिनाई। ओके, लेकिन अगर दूसरे मशीन से पिंग करता हूँ, ओके, इस मशीन से अगर पिंग करता हूँ 192.168.103.2, see that this machine is getting deployed. Okay, so we are not blocking this machine's communication. This laptop one is blocked, but remaining pieces are allowed. Okay, अगर इस मशीन से पिंग करता हूँ, so here also you can see we are getting the reply. Okay, लेकिन इस मशीन से सारे पैकेट्स ब्लॉक हो रहे हैं। Okay, so that is what you are getting the advantage of using ACL. Okay, इसका स्क्रीनशॉट लो, ऐसा ही अप्लाई करना है। Okay, अगर तुम्हें ये ACL को डिलीट करना है, then no, give the no command और ये पूरा कमांड को कॉपी करते हैं and paste it. It will delete it. Take the screenshot of it. Taken. Yes, sir. ठीक, तो ऐसे ही तुम्हें बाकी इधर पे जो नंबर ACL ऐसे ही करना है। Then we are having our extend numbered ACL. अब extend numbered ACL पे बेसिकली हम लोगों को सोर्स, डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है इधर पे कि इस मशीन जो है, ये जो मशीन है लैपटॉप 1, इसके पिंग को हम लोग ब्लॉक कर इस सर्वर। ओके, मतलब ये मशीन इसको पिंग नहीं कर सकती, लेकिन ये मशीन अगर इसको पिंग करता है तो ये अलाउड है। ओके, वन नॉट ब्लॉकिंग the laptop 1 ping to server 1, okay, only server 2 ping is blocked. Similarly, इस machine ये जो PC है, इसके ping को हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, okay, blocking the ping to server 1, but we are not blocking its ping to server 2. मतलब अगर ये PC server 1 और server 2 को ping करता है, then it should be allowed. तो ऐसे टाइप के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इस पे एक्सटेंडेड ACL हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे कि ये ping यूज कर रहा है, तो पिंग के जो प्रोटोकॉल है IC, okay, इसके बेसिकली 2 पैकेट्स होते हैं। वन होता है इको पैकेट, इको, एंड वन होता है इको रिप्लाई। ओके, इको रिप्लाई मतलब जब लैपटॉप 1 इसको पिंग करेगा तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा यूजिंग दिस इको पैकेट।
ओके, अब जब ये सर्वर रिप्लाई करेगा तो ये रिप्लाई देगा यूजिंग इको रिप्लाई का। ओके, तो ये इको जो होता है ये बेसिकली दैट इज योर रिक्वेस्ट पैकेट व्हाट यू आर यूजिंग। ओके, एंड दिस इको रिप्लाई इज द रिप्लाई व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द डेस्टिनेशन टू योर मशीन। ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं और उनके जो पैकेट टाइप्स हैं ये तुम्हारे इंटरनेट से मिल जाएगा। ओके, इंटरनेट पे सर्च करके आराम से निकाल सकते हैं। ओके, जैसे कि HTTP के पैकेट्स क्या क्या हैं, FTP के क्या क्या पैकेट्स हैं। ओके, सारे प्रोटोकॉल्स के पैकेट्स हैं, तो ये सारे पैकेट्स के नेम को जानना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर सेइंग एक्सेस दिस, ये नंबर इज गिवन। ओके, एक्सटेंडेड वाला तो हंड्रेड्स लिया है हम लोगों ने, तो 100 to 199 you can take any number. So in taking 100 you are denying ICMP क्योंकि पिन को ब्लॉक करना है from this source, that is our source wildcard, this is our destination, that is this server, that is the destination wildcard, and lastly echo means sending request. So when this machine will be sending request, echo request to this server machine with this protocol ICMP, तो हम लोग इसको ब्लॉक कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। सिमिलरली तुम्हारा 103 को इस पर्टिकुलर सर्वर के आईपी पे हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, दैट इज योर पीसी। ओके, ये तुम्हारा पीसी का आईपी है, इस पे ब्लॉक हो रहा है 103.0। देन वी आर परमिटिंग द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक, तो दैट इज योर आईपी एनी का मतलब होता है सोर्स, ये एनी का मतलब होता है डेस्टिनेशन। नाउ व्हाई वी आर गिविंग आईपी परमिट, बिकॉज़ आईपी इज द मेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ओके, ये तुम्हारा मेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। अगर आईपी अलाउड नहीं होगा तो राउटिंग कैसे होगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई एग्जैक्टली वी नीड टू परमिट आईपी, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी ब्लॉक्ड। तो ये जो एक्सटेंडेड एसएल जो हम लोग कर रहे हैं ये बेसिकली गेटवे मार्क पे कर रहे हैं। व्हाई, बिकॉज इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू कॉन्फ़िगर एक्सटेंडेड एसएल क्लोजेस्ट टू द सोर्स। ओके, तो जो भी तुम्हारा सोर्स होगा उसके क्लोजेस्ट वाला राउटर पे कॉन्फ़िगर करना। So we are configuring it in the in direction. Okay. अब ये देखो इंटरफेस F0/1 जिधर पे तुम्हारा सोर्स से पैकेट इन हो रहा है। ओके, इस इनबाउंड डायरेक्शन पे तुम SCL पे अप्लाई करो। तो मैं ये करके देखता हूँ। ओके, ये मैंने SCL को कॉपी किया है, इधर पे गेटवे 1 पे जा रहा हूँ, पेस्ट कर देता हूँ and simply just paste it. ठीक है, तो ये तुम्हारा SCL कॉन्फ़िगर हो चुका है। शो IP एक्सेस लिस्ट। ओके, तो ये रहा तुम्हारा तीनों SCL। ओके, सीक्वेंस नंबर 10, 20 एंड 30। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पिंग करके देखते हैं, इस मशीन से पिंग करेंगे इस सर्वर पे। 103.2। So you can see that we are blocking it, lost 4. But if we are pinging 192.168.103.3, see that we are getting the reply. मतलब इस मशीन का सिर्फ पिंग इसी सर्वर पे ब्लॉक है, इस सर्वर पे अलाउड है। Okay. Similarly, if I go to PC1 and if I ping 192.168.103.3, that is our server one, it should be blocked. Destination host name is. But if I am pinging 192.168.103.2, that is our server 2 here, see that you are getting the reply. Okay. So these are basically customized requirement what you are getting. Okay. Based on which you can do the filtering. Okay. इसका screenshot लो। अगर तुम्हें extended SCL को delete करना है, then simply just copy that access list 100, उतना तक copy करो और paste करके delete करो। It will be deleted. Take the screenshot of it. Taken. Everyone taken, right? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो सिमिलर प्रोसेस हमारे इधर पे एक्सटेंडेड नेम्ड SQL पे भी है, सेम रिक्वायरमेंट है। ओके, रिक्वायरमेंट सेम है, तो इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इधर पे देखो, ये तुम्हारा IP एक्सेस लिस्ट कमांड है एक्सटेंडेड। बाकी ये तुम्हारा ब्लॉक क्लाइंट्स है, नाम SQL का नाम,
और इधर पे अगर देखते हो ये देखो सेम रूल्स हम लोग ने क्रिएट किया, ये जो तीनों रूल्स नंबर डिस्प्ले पे क्रिएट किया था सेम रूल्स इधर पे। ओके एग्जिट डाल रहे और इंटरफेस अभी FS0/0 पे, अगर चाहते हो तो 0/1 पे भी इन कर सकते हो। ओके ब्लॉक प्लांट्स डाल दो। अगर ये इंटरफेस पे अप्लाई करते हो तो ये डायरेक्शन देख लो, तुम्हारा डायरेक्शन कौन सा होगा, ये 0/0 पे ये आउट होगा, आउट। जो सोर्स से पैकेट्स आ रहे हैं then इस इंटरफेस से आउट हो रहा है। ओके सो दैट इज व्हाई यू नीड टू गिव आउट डायरेक्शन हियर। ओके तो ये अगर अप्लाई कर देते हो सेम रिजल्ट, जो रिजल्ट अभी देखा सेम रिजल्ट आएंगे। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो इसके ऑल ऑफ यू, और ये कॉन्फ़िगरेशंस एक एक करके प्रोजेक्ट पे करके देखो, पिंग करके देखो। You should be able to block certain machines from communicating your destination machines here. Okay, so taken the screenshot, right? Yes, sir. Have extended numbered, extended named. अरे बाप रे बाप। Taken. Yes. All right. तो ये अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट को प्रैक्टिस करना है। ओके इन द नेक्स्ट सेशन जस्ट लेट मी नो अबाउट इट। तो नेक्स्ट सेशन के जो कॉन्सेप्ट रहेंगे ये होगा नेट एंड वन टेक्नोलॉजीज। These are the two concepts what we are going to be discussing next. एक होगा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, दूसरा होगा YTT नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। ओके सो do some project, okay, show it to me in the next session if possible. ये SCL के कॉन्फ़िगरेशन सारे दिए हुए हैं, इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ in the next session. All right, so bye, take care and good night everyone.